बियॉन्ड एबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होगे। बियॉन्ड एबेकस में हम मैथमेटिक्स को एक कैलकुलेशन टूल या कंप्यूटेशन टूल से अधिक एक सोच, एक गणित को देखना, गणित को समझना, गणित को जीवन में उपयोग करना ऐसा मानते हैं। इसलिए हमने इसका नाम दिया है बियॉन्ड एबेकस। मैथमेटिक्स इज जस्ट नॉट कैलकुलेशन। आप कितने बड़े कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ काम नहीं आएंगे अगर आपकी मैथमेटिकल सोच नहीं है, अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता है, अगर आपको सिंबल समझ में नहीं आते। सो वी वर्क विद दैट फिलॉसफी। और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कोर्सेज लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, टीचर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और उसी सीरीज में गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स एक पर्टिकुलर हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है या फ्लैगशिप सर्विस है, जिसके बारे में ये वीडियो सीरीज बनी हुई है। और उसमें आपने अभी तक देखा कि जो गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स है, ये बेसिकली एक ऐसी मेथड है जिसमें आप स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम उसको स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको डायग्नोसिस करते हैं और उसको एक रेमेडियल टीचिंग देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली मैथमेटिक्स के प्रति उसके गलत एटीट्यूड, गलत वर्किंग हैबिट्स, हैंड राइटिंग मैथमेटिक्स की सब कुछ सुधर जाए और एक नॉर्मल स्ट्रीम में आ जाए, जिसकी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स क्या है। सिमिलरली एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उनका बच्चे पे कैसा प्रभाव पड़ता है और वो बच्चे को कहाँ कहाँ हर्ट करते हैं, इस पर भी एक वीडियो है, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है। और तीसरा वीडियो जो हम अभी तक देख चुके हैं वो कि परसीव प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट को लगता है कि वो मैथ्स में वीक है किन्हीं किन्हीं कारणों से, वो भी एक डिटेल में वीडियो दिया हुआ है। तो इसी कड़ी में आज हम जो अलग अलग इस कड़ी में जो हम अलग अलग कारण देख रहे हैं बच्चों के मैथ्स में वीक होने के, उसी कड़ी में आज का कारण हम देखेंगे जो कि है मेमोरी रिलेटेड इश्यूज। ये इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि इम्प्रूव किए जा सकते हैं, सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। और आप भी याद कीजिए, आप तो एडल्ट हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप भी याद कीजिए, कभी आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जब होता है तो आपको सीधे घर के नंबर याद नहीं आते हैं, घर के लोगों के किसी के नाम एक्सचेंज हो जाते हैं, किसी रिलेटिव का नाम एक्सचेंज हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, या आपका सवाल क्या पूछते हैं, आप जवाब क्या देते हो। ये मेमोरी माइंड प्रेशर जो होता है उसका कारण बहुत सारा होता है। लेकिन साथ ही मेमोरी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग which is not unrelated to this, but it's very very related to this. So let us see some issues which are related to memory in particular. Mixing symbols, concepts and operations. थोड़ा सा I would like to draw here. So have a look at this. Like I will say, हमारे साथ आपके साथ भी होता होगा कि sometimes you write n and sometimes you write x. So student and then you write u, then you write v. So students are simply writing like this, or for example they want to write x square, they want to write this, लेकिन वो लिख देते हैं ये सब। और फिर इसके बाद में कुछ तो इतने बढ़िया बढ़िया मैथ्स करते हैं जो जैसे 36x अपॉन, मुझे तो गलत लिखते भी नहीं आता है, बट सपोज बाय द वे ऐसा हो तो वो ये तो काट देते हैं, साथ में ये भी काट देते हैं। So they mixing symbol, they mix symbols, they think x is n is x. Sometimes their writing is weak, sometimes teacher's writing is weak. So they mix symbols, very basic symbols. Then after that, if that is not enough, इसके बाद में होता है concepts. जैसे कि आपने एक लिया, एक आपने एक बार समझाया कि +3 - 2, इसका आंसर है 1, तो ठीक है, तो समझ में आ गया। बट इफ यू से 3 × -2, नाउ आंसर इज -6। सो इफ यू आर नॉट टीचिंग देम प्रॉपरली, अगर उनको फॉर्मेटिव स्टेज में ठीक से नहीं सिखाया जाता है तो वो ये सब होता है, मिक्सिंग सिंबल्स एंड ऑपरेशंस। दे फील कि अरे अभी तो ये ऐसा किया था, अभी तो ऐसा कर दिया था। और बहुत ही ज़्यादा अन्याय जब हो जाता है, जब आप ये करते हैं तो आप बोलते हैं आंसर -3 है, और 2 × -5 जब करते हैं तो आप बोलते हैं आंसर -10 है। तो दैट इज समथिंग, अगर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं तो दीज आर बिकमिंग वेरी मेजर इश्यूज एंड स्टूडेंट रियली मेस अप थिंकिंग दैट दिस इज दैट एंड दैट इज दैट। तो वो बहुत ज़्यादा उनको
उसमें इशू आते हैं which we need to address and handle when we are teaching them these sensitive things. Likewise, if we go further, you will find inability to relate two or more concepts together. आपने उनको अगर प्रॉपरली जिसको जॉब भेजेगी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, सो इफ यू नॉट कंस्ट्रक्टेड द प्रॉब्लम प्रॉपरली, अगर आपने उनका बेस पक्का नहीं किया, इफ यू नॉट रेज देम टू अ सर्टेन लेवल, देन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू आर मोर कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि आपको बताऊँ मैं, अभी हम सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम बच्चों को सिखा रहे हैं अलजेब्रा. सो वी आर टीचिंग एक्स वाई जेड की टर्म में सिखाते हैं इसको, ठीक है. अभी आपने एक ट्रायंगल सिखाना चालू किया. अब ट्रायंगल के वर्टिसेस तो हैं एक्स वाई जेड, बट इनके सामने की साइड कहलाती है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड. अब सब खेला शुरू होता है. नाउ स्टार्ट ऑल द इश्यूज, बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड that the difference between capital X and small x if you have not handled them properly. And unfortunately in our country, geometry is the most neglected aspect of the studies. It gets truncated. सारी किताबों में लास्ट चैप्टर्स रहते हैं और उसमें भी क्या पढ़ाते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, उसी में से पूछ लेते हैं. So many things are there. Unfortunately about geometry, and that is why when you go to college and university, when the students go to college and university, they try to see shortcuts for engineering drawing also, because आपका visualization खुला ही नहीं. So that is one important issue, that their inability to relate two or more concepts together becomes a major issue in solving math solving. So let us clean up the board first. One more thing which happens is too many formula and facts to remember. What happens now? There are teachers who are teaching very funny ways and very so many things. For example, in trigonometry, when you are teaching of trigonometry, so there is something called Pandit Hari Prasad, Badri Prasad. I don't know what all formula people are using. So what happens is, within trigonometry, you will come across say 400 plus formula. Within trigonometry, if you study trigonometry, now they are basically very few formula. But if you keep saying that this is different, that is different, that is different, then definitely all are different. So like, for example, there are digits. The digits are only 0 to 9. There are only 10 digits. But the whole world of mathematics is built around these 10 digits. There are 3 basic colors. There are 7 basic musical notes. So similarly in mathematics, the teacher should tell the students that there are very less formulae or very less things to mug up. Most of the things are to be understood and how they are interconnected. If you understand, then you don't have to mug up any formula. So that is very basic thing which we are missing in our education system, unfortunately, and this become a major reason for the students to get messed up, and they really get worried as to what is happening and where I am, do I know maths at all. And that happens with many times in competitive exams. The students are writing, they are really worried about so many formulae. Especially, for example, if somebody writing, you need physics for NEET, and you are a bio student, you left maths not to study, but you need physics now, so you need to revise your maths. So that is where you need to focus. The teachers need to tell कि इतने सारे फार्मूले नहीं है थोड़े से ही घुमा फिरा के उन्हीं को आप बोलते हैं. तो ये बड़ी मेजर इश्यूज आती है. Let us continue the discussion. Language math interface missing. इस पे I'll tell at length some other time also. Language math interface means students are unable to understand, connect language and mathematics. For example, if you say 2 more than 5, let me write. That's better way of doing it. So if I am writing 5 plus 2 is 7. This everybody knows. But if you ask them that 2 added to 5 is 7, or 7 is 2 more than 5, 7 is 5 more than 2, we need to tell them in these many things, because then the mind will develop. आप रटा दोगे कि 5 plus 2 is 7, जल्दी करो, उससे कुछ नहीं होगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा. आपको इस स्टेटमेंट को 10 बार बोलना पड़ेगा कि 7 is 5 more than 2, 7 is 2 more than 5, 5 plus 2 8 to 7,
7 can be obtained by adding 5 and 2. So the same fact you tell in different way. Then the language maths interface comes in the brain, and students start enjoying maths. They understand what is it and what is it to know maths. Skipping up courses, as I told just now, the geometry is often skipped. So many things are taught in great hurry, so that could be the reason. And now I invite you to think on these points and come up with your own points. That how do you relate to these points which I told just now? और आपको ये पॉइंट कैसे लगे, आपके खुद के जीवन के अनुभव क्या हैं, कृपया कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। और हमारे सोशल मीडिया पे रील्स शॉर्ट्स वगैरह हम बनाते हैं, उसको भी आप जरूर से आइए, ये मेरा निवेदन रहेगा। और थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।